Hello students, today's question was a patient who was a chronic diabetic, his renal biopsy picture was given to you. The pathognomonic lesion in diabetic nephropathy is KW lesion or KW disease, that is the Kimmel-Steele-Wilson nodule or Kimmel-Steele-Wilson disease. Second part of the question was what is microalbuminuria? So microalbuminuria का मतलब होता है excretion of albumin in the range of 30 to 300 milligrams per day. ये जानना हमें क्यों ज़रूरी है? Because this is an early and sensitive indicator of reversible nephropathy. इस स्टेज पे भी अगर पेशेंट टाइट ग्लाइसेमिक कंट्रोल कर लेगा तो उसकी जो नेफ्रोपैथी है वो इस स्टेज तक रिवर्सिबल रहती है बिफोर गोइंग इनटू ओवर्ट प्रोटीन्यूरिया. सो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रोएल्बुमिन्यूरिया. नाउ लेट्स स्टडी डायबिटिक नेफ्रोपैथी. Diabetic nephropathy is the most common cause of end-stage renal disease. Approximately 40% patients of type 1 diabetes mellitus and 5 to 15% patients of type 2, they end up into end-stage renal disease. And also renal failure is second only to MI as a cause of death in diabetes. Now, what are the risk factors? क्रॉनिक परसिस्टेंट हाइपरग्लाइसीमिया, अगर पेशेंट के शुगर्स कंट्रोल में नहीं है एंड देर इज़ हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट विच इज़ परसिस्टेंट. नंबर 2 इज़ हाइपरटेंशन. थर्ड इज़ अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ नेफ्रोपैथी एंड हाइपरटेंशन. एंड फोर्थ इज़ स्मोकिंग. सो दीज आर द रिस्क फैक्टर्स. Clinical features of diabetic nephropathy: non-selective proteinuria is the most consistent feature. नॉन सिलेक्टिव प्रोटीन्यूरिया का क्या मतलब होता है? जब एल्ब्यूमिन के मॉलिक्यूलर वेट तक के मॉलिक्यूल्स व्हेन दे आर एक्सक्रीटेड, दैट इज नोन एज सिलेक्टिव प्रोटीन्यूरिया. नॉन सिलेक्टिव में जब इससे भी बढ़े, so much so that even immunoglobulins are excreted, that is known as non-selective proteinuria. So non-selective proteinuria means proteins of all sizes, they are getting excreted. This is a consistent feature of diabetic nephropathy. दूसरा है नेफ्रोटिक सिंड्रोम. नेफ्रोटिक सिंड्रोम जब हमने पढ़ा था तब भी हमने पढ़ा था कि डायबिटीज़ मेलाइटिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉज, वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टेमिक कॉज ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम. नेफ्रोटिक सिंड्रोम, रिमेंबर, always your answer must begin with massive proteinuria, that is proteinuria more than 3.5 grams per day. दूसरा फीचर रहता है इसका हाइपोएल्बुमिनीमिया, एल्बुमिन कॉन्सेंट्रेशन लेस देन 3 ग्राम्स पर डेसीलीटर. तीसरा रहता है मैसिव, और जिसको हम कह सकते हैं जनरलाइज्ड इडीमा, जिसको पिटिंग इडीमा हमने कहा था. फोर्थ इज योर hyperlipidemia and fifth is lipiduria. So these are the features of nephrotic syndrome. फिर microscopic hematuria can also be seen and hypertension as a late complication. Now diabetic nephropathy, the most consistent feature is diffuse thickening of basement membrane. Very important feature. जो diabetic capillaries रहती हैं, they become more leaky to plasma proteins. And microangiopathy. See, micro means small, angio refers to blood vessels and pathy is disease. So this is a disease of the small blood vessels of kidney, and we know glomerulus क्या होता है? It is a tuft of capillaries, that is, it is a tuft of small caliber blood vessels. This is the pathophysiology of diabetic nephropathy. So there is chronic hyperglycemia. हमने देखा था जो risk factor था वो chronic persistent hyperglycemia. So hyperglycemia leading to production of growth factors, antithrombin 2, endothelin, advanced glycosylation end product जिसको हम AGE कहते हैं, इनका accumulation हो जाता है, जिससे क्या होता है? There is hemodynamic alteration in renal microcirculation which causes increased hyperglomerular filtration. So there is glomerular hyperfiltration, hyperperfusion, very important, asked in your vivas, and increased glomerular capillary pressure जिसको हम कहते हैं intrarenal hypertension. इन सब से क्या होता है? There are structural changes in the glomerulus. There is increased extracellular matrix, there is basement membrane thickening, there is mesangial expansion and fibrosis.
So this is how the diabetic nephropathy progresses or develops. The earliest demonstrable abnormalities are intrarenal hypertension, that is, there is increased glomerular capillary pressure. There is hyperfiltration, that is, there is increase in GFR, very important for your MCQs. There is microalbuminuria. Microalbuminuria I just told you, इसका मतलब होता है 30 to 300 milligrams of albumin are lost per day. इसका significance है, it is an important screening tool for identifying early and reversible nephropathy. So if you have a diabetic patient at home, उनका समय समय पर आपके फिजिशियन की सलाह के अनुसार यूरिन माइक्रोएल्बुमिन और ब्लड में HbA1c ये रेगुलरली आप टेस्ट करते रहें टू अचीव अ टाइट ग्लाइसेमिक कंट्रोल. Then diabetic microangiopathy. We saw that this is a disease of the small vessels of kidney. So the lesions found are diffuse mesangiosclerosis, nodular glomerulosclerosis, exudative lesion in the glomerulus. Then there are renal vascular lesions like arteriosclerosis and pyelonephritis. Very typical of diabetic nephropathy is necrotizing papillitis, specific for diabetic nephropathy. Glomerular lesions में क्या हो रहा है? Capillary basement membrane thickening. Then there is diffuse mesangiosclerosis. There is nodular glomerulosclerosis. Capillary basement membrane thickening is seen in virtually all cases of diabetes mellitus, and it begins as early as 2 years of onset of type 1 diabetes. Continuously वो progress करेगा, and there is concurrent thickening of the tubular membranes. तो glomerular capillary basement membranes के साथ में जो tubular basement membrane है वो भी thicken हो जाती है. So in this picture you can appreciate that there is thickening of the tubules, tubular basement membrane, there is thickening of glomerular basement membrane, thickening of the vessel wall. So all basement membranes are thickened. In this picture you can appreciate with a normal, this is the normal thickness of basement membrane, and here you can see it is thickened markedly. This is an electron microscope picture of basement membrane. Then diffuse mesangial sclerosis, there is increase in mesangial matrix, the cell proliferation is not a prominent part of the injury, and the mesangial deposits, they are PAS positive. Nodular glomerulosclerosis, please take a screenshot of this particular slide. I have compiled the pathognomonic feature of KW nodule from various sources. तो इसका आप एक screenshot लेके रख लीजिए. What is KW nodule और Kimmel-Steele-Wilson nodule के क्या features रहते हैं? It is also known as intercapillary glomerulosclerosis because of its location between the capillary loops. It is present between two capillary loops. That is why it is known as intercapillary glomerulosclerosis. कैसा रहता है वो नोड्यूल? ओवॉइड या स्फेरिकल, एसेलुलर, उसमें सेल्स नहीं है, इंटरकैपिलरी लोकेशन में है या ग्लोमेरुलस के पेरिफेरी में लोकेटेड है, वेरिएबल साइज के हैं, मतलब एक ही ग्लोमेरुलस में अलग अलग साइज के हमको नोड्यूल्स मिल सकते हैं. ईओसिनोफिलिक होते हैं, मतलब जब हम H&E स्टेन से उसको स्टेन करते हैं तो वो पिंक कलर लेते हैं, दैट इज दे आर ईओसिनोफिलिक. पास पॉजिटिव पर आयोडिक शिफ्ट स्टेन में वो पॉजिटिव मिलते हैं हमको, सो दे आर पास पॉजिटिव. आर्गायरोफिलिक, आर्गायरोस का मतलब होता है सिल्वर, आर्गायरोफिलिक मीन्स विच हैव एफिनिटी फॉर सिल्वर. तो जो सिल्वर डाई है या सिल्वर स्टेन रहता है उससे पॉजिटिव स्टेन मिलता है हमको. They have a laminated appearance, that is concentric laminated appearance. Mason's trichrome stain में हमको green color देता है ये, and they show mesangiolysis with fraying of mesangial or capillary lumen interface. So these are the very important features of KW nodule, Kimmelston-Wilson nodule. ये आप इसको याद रखिएगा. So nodular glomerulosclerosis, तो जो कैपिलरी लूप्स रहती हैं जो इनके सराउंडिंग रहती हैं, हमने देखा दो कैपिलरी के बीच में नोड्यूल है, तो इसके जो एडजेसेंट कैपिलरी नोड्यूल है
या तो उसका ल्यूमन बहुत नैरो हो जाएगा या उसका एन्यूरिज्मल डायलिटेशन हो जाएगा, विच आर नोन एज माइक्रो एन्यूरिज्म्स, और they may have peripheral mesangial extension. So here in this picture you can see this is a KW nodule. It is pinkish with HNE stain. This is another nodule. You can appreciate कि variable size के हैं, कोई छोटा है कोई बड़ा है. ये पास स्टेन से, पर आयोडिक शिफ्ट स्टेन से आपको दिख रहे. They have appeared pinkish in color. Okay. फिर इसमें सिल्वर स्टेन में we had seen that they are argyrophilic, so they have this prominent concentric lamination with silver stain. On Mason's trichrome stain you can appreciate there is mesangial widening. Mesangial widening का मतलब होता है that the cellularity of the mesangium has increased. Bowman's capsule की thickness बढ़ जाएगी. There is diffuse thickening of the capillary wall. In this picture you can appreciate the variability in size of nodules. Some nodules are small, some nodules are big, some are large. So within one glomerulus you can see variable sized nodules. इंसिडेटिव लीजन्स, इंसिडेटिव लीजन्स का कुछ याद न रहे अगर आपको एग्जाम में, तो सिर्फ फिब्रिन कैप और कैप्सुलर ड्रॉप याद रखिएगा. दीज आर टू इम्पॉर्टेंट इंसिडेटिव लीजन्स. Ultrastructurally they are masses of finely granular electron dense material and they often contain lipid droplets. So this is hyaline cap. You can appreciate in this empty stain. This is a hyaline cap. This is capsular drop fusionophilic, pinkish color on Mason's trichrome. Now these are the four alterations which occur: mesangial widening, arteriolar hyalinosis, capsular drop and renal microaneurysms. Microaneurysm is aneurysmal dilatation of the capillary loops adjacent to the nodules. So the first part was the glomerular lesion. The second is renal vascular lesion, that is renal atherosclerosis and arteriosclerosis, that is part of the macrovascular disease. Glomerular lesion में microangiopathy थी, मतलब small vessels की disease, और जो diabetes में overall there is macrovascular diseases of the large caliber vessels. So kidney is one of the most frequently organs involved in this macrovascular disease. ये एक बायोप्सी पिक्चर है एक 58 ईयर फीमेल का डायबिटिक ग्लोमेरुलोपैथी का, जिसमें आपको आर्टीरियोल्स में देयर इज सिवियर हाइलिनोसिस. पाइलोनेफ्राइटिस इन डायबिटीज मेलाइटिस, दैट इज क्लासिकली नोन एज नेक्रोटाइजिंग पैपिलाइटिस और पैपिलरी नेक्रोसिस. ये बहुत स्पेसिफिक फीचर है वाइवा के लिए, याद रखिएगा इसको. Now this is on gross how the necrotizing papillitis looks like. On microscopy you can appreciate the inflammatory cell infiltrate. Atubular glomeruli वो glomeruli होते हैं जिनकी adjacent proximal tubule से उनका connection टूट चुका है. For example ये first picture में आप देखोगे एक छोटा सा atrophic tubule attached है, second picture में एक लंबा atrophic tubule attached है, थर्ड में एक एट्रोफिक ट्यूब्यूल अटैच्ड है लेकिन उसकी कोई ओपनिंग नहीं दिख रही है, और फोर्थ में कोई ट्यूब्यूल नहीं. सो दैट इज नोन एज एन एट्यूब्यूलर ग्लोमेरुलस. अरमानी एप्स्टीन लीजन आजकल हमको देखने को नहीं मिलते हैं. पहले जब डीकॉम्पनसेटेड डायबिटीज़ रहता था या अनकंट्रोल्ड हाइपरग्लाइसीमिया जिनमें 500 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा हमको शुगर लेवल्स देखने को मिलते थे, उन पेशेंट्स में अरमानी एप्स्टीन लीजन्स दिखते थे. They were nothing but glycogen deposition in the proximal tubular epithelial cells. तो इस पिक्चर में आप ध्यान से देखेंगे, so there is deposition of glycogen in the tubular cell, that is known as Armani-Epstein lesion. ये याद रखिएगा because the senior examiners who come for exam they usually ask this lesion. Now on immunofluorescence there is diffuse linear pattern of reaction for immunoglobulin G. So this is how it looks like. There is capillary wall with linear positivity seen with immunoglobulin G and albumin. Thank you so much.